Hi, welcome to the audition. Please introduce yourself. Hi MTV, this is Vinita Chatterjee. I'm a mass communication postgraduate from Loreto College, Calcutta University. मैं basically Calcutta से belong करती हूँ और क्या बताऊँ, anchoring is something that runs in my blood. It's there in my veins and I'm a very spontaneous anchor. मैं बहुत ज़्यादा दिल से communicate करती हूँ और मेरी हर बातें दिलों को छूती है. थैंक यू. विनीता, आप हमें ये बताइए कि आप एक रियलिटी शो स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शो में ही क्यों आप एंकरिंग करना चाहती हैं? मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है अपना टैलेंट, अपने हुनर को दर्शाने का, क्योंकि एंकरिंग एक ऐसी इट्स सच अ माइलस्टोन वेयर यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एवरी मिनट. देयर आर नो स्क्रिप्ट्स इन अ शो लाइक स्प्लिट्सविला. इट इज़ एब्सोल्युटली नॉन स्क्रिप्टेड, जहाँ पर आपको कंट्रोल लेना है. यू हैव टू टेक चार्ज, यू हैव टू प्ले द शीट एंकर रोल. कोई भी सिचुएशन को कभी भी कैसे भी आपको हैंडल करनी है. आपको आपका विट, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका स्पॉन्टेनिटी दिखा के अपने दर्शकों को और अपने कंटेस्टेंट्स को भी चार्म करना है. थैंक यू. विनीता, बाय द वे, जैसे कि आपने हमें कहा है कि आप रियलिटी शो में काफ़ी इंटरेस्टेड हो एंकरिंग के लिए, तो क्या आपको स्प्लिट्सविला के बारे में कोई नॉलेज है कि कैसा ये शो है? डेफिनेटली. मैं पिछले so many years I've been following Splitsvilla. I'm like an avid viewer of Splitsvilla. I love the concept of a love reality show. मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि अब्रॉड में जैसे ऐसे शोज होते हैं, इंडिया में भी ऐसे हो. एंड ट्रस्ट मी, थैंक्स टू स्प्लिट्सविला हम लव को भी लोगों के सामने एक नए पहलुओं के साथ दर्शा सकते हैं. एंड आई फील स्प्लिट्सविला गिव्स यू अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू कम इन द लाइमलाइट because there's a lot of emotions which people, the audience, can connect. Trust me, nothing connects more than love. That's why I really love this reality show. थैंक यू. हमारा अगला सवाल आपसे है कि जैसे कि आपने बताया ये प्यार के बारे में, प्यार को और लोगों की भावनाओं को ये शो से हम दिखाते हैं दर्शकों को. तो जो कंटेस्टेंट्स है, आपको पता ही है कि they may not be in a good mood sometimes, you know, they will have to perform under pressure sometimes. So how flexible you are in adjusting with the moods of the contestants, because how will you be able to convince them or bring a smile to their face, Vinita? Well, I think it's something there in me that I can sense the atmosphere very easily. मुझे हर चीज़ का पता बहुत जल्दी चल जाती है कि एक इंसान के अंदर क्या चल रहा है. तो सपोज आई कैन सी वन ऑफ माई कंटेस्टेंट इज फीलिंग वेरी वेरी अपसेट or a little low. अपना yes definitely when somebody is a little low, मैं definitely एक वन लाइनर बोल के उसको थोड़ा हंसा सकती हूँ, या फिर उसके कुछ इमोशनल मोमेंट को हाईलाइट कर सकती हूँ जिससे व्यूअर्स को भी एक मोमेंट मिले देखने के लिए. तो मुझे लगता है कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी हो, मुझ में वो हुनर है कि मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्प्लिट्सविला में जैसे कि आपने देखा होगा जो एंकर्स होते हैं, दे टेक द मेन लीड ऑफ मेकिंग द कंटेस्टेंट्स अंडरस्टैंड देयर टास्क्स particularly, right? And also when there is a quarrel or when there is a misunderstanding between the contestants, which is but obvious because you know people from different temperaments will be coming together. They have different backgrounds. Yes, absolutely. तो एक एंकर का काम सिर्फ यही नहीं होता है कि शो की एंकरिंग करे या कम्युनिकेट करे, बट एट द सेम टाइम एंकर जो है शो को इन डेप्थ समझे, to read the contestant's mind and also to take the lead whenever there is a crisis. Absolutely. So do you think will you be able to put up with these things? See, like I told in my introduction only that I love to play the sheet anchor role. Yeah. Since my childhood, I've always taken leaderships. Okay. So something that is uniquely and inherently inside me, I think मैं कैमरा के सामने इसको दर्शा सकती हूँ. मुझे लगता है अगर कोई कंटेस्टेंट उसका कोई भी इमोशनल बैगेज हो, तो मैं उनको कभी भी इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करूंगी कैमरा के सामने. आई वुड
rather like them to feel at home, you know, so that not only my viewers but my contestants and everybody feels secure, and well, the atmosphere is very nice. Vinita, you must have seen the kind of shows we do in MTV like Roadies and Splitsvilla. Absolutely, I'm a huge fan. Yeah, thank you for that. Apart from bringing a smile to the contestants and, you know, making the contestants understand and, you know, make them feel at home, there has been some times which you have seen always in the reality shows. Kabhi kabhi you need to discipline the contestants sometimes, you know. Definitely. You know, when there is any kind of problem between the contestants, you know, the anchor, our previous anchors have done this with a lot of confidence. Yes. And there are sometimes you need to discipline the contestants and tame them. So do you think this is another particular quality we are looking from an anchor? Would you be able to do it? Yeah, like I told you, I take the leadership role very, very seriously. Yeah. When I need to lead with discipline, I would definitely perform with sincerity. When I need to lead with happiness, I would perform it with sincerity. When I need to lead with wit and charm and peppiness, या फिर कुछ तड़का, मैं वो भी कर सकती हूँ. तो cast me in any kind of a role and you see. ओके विदिता, एक हमारा सवाल है आपसे, जो आप रियलिटी शो करने के लिए इंटरेस्टेड हो. देखिए, स्प्लिट्सविला में काफी बड़े से बड़े एंकर आए थे, यू नो, एंड दे हैव सेट अ बेंचमार्क, यू नो, in front of the whole community and in front of the television reality shows, and we have got always the best of the anchors in our team for Splitsvilla, you know. So do you think that you will be able to match yourself up to their standards? Well, यहाँ पर मुझे एक चीज बोलना है कि Rome wasn't built in one day. Everybody has a humble start and then they go ahead. मुझे लगता है कि मैं अपने X Factor से, अपने edgy, peppy conversationalist और मेरे cute, bubbly अंदाज से मैं भी अपना एक अलग niche create कर सकती हूँ. And that will be the Vinita style. I don't want to ape anybody, but I respect and honor all my previous anchors. I feel they are genuinely role players, and they are somebody who can set big examples. Correct. But I won't take their examples. I would rather set my own. My last two questions for you, Vinita. The first question is that, you know, in case you get selected as an anchor for the MTV Splitsvilla, what difference would it make in your life after this? Well, मेरे लिए तो बहुत ही एक important journey रहेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही challenging experience होगा. इतने सारे different emotions के साथ deal करना और उसको एक अलग तरीके से सामने ले जाना. To present the entire show with a panache, with a versatility, और अपना एक style, एक unique, एक spontaneity create करना मेरे लिए एक नया, I think, milestone होगा, and I think that is very, very significant for my career. Okay, our last question, Vinita. We won't take much time of yours. You know, Splitsvilla, you know, we travel a lot. I mean, we go to Goa last year. We went to Dubai. The entire the show was shot in Dubai extensively. So there is a very high possibility that you might need to travel with the cast and the crew of the team. Are you comfortable in relocating and traveling with us? Well, to be very, very honest, I feel I'm like the Samantha Brown of TLC in Indian travel channels. I mean, I feel I really sincerely want to be a travel show host tomorrow. The traveling is something in me, and traveling for communication, definitely I would love to do that. And do you think will you be able to work under pressure? We might have hectic schedules and we might shoot throughout the day and night, you know. Last year it was in Dubai, it was very hot, you know, in Dubai. You know how the weather is, the temperature is. So this year it could be any location. Do you think you'll be able to handle the pressure? See, I feel at the end of the day, if the people are happy and satisfied with my performance, and if I am myself satisfied with my performance, the entire toll of the day vanishes like this. Okay. Thank you, Vinita, so much for giving the audition as an anchor for MTV Splitsvilla. Thank you We so will much. let you know soon the results. Thank you for coming here. Thank you so much. Thank you so much. Yeah.